सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। आज हम फिर से खेलने वाले हैं ट्रकर्स ऑफ इजिप्ट 3। वैसे तो आज मैं कार रेसिंग 2 का लाने वाला है, बट ये भी नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा उसका मेरे को। स्टार्ट करते हैं। ये अपना वही वाला पार्ट 2 है। मजा आ रहा है यार चलाने में। बिकॉज गाइस कुछ चेंजेस करा है मैंने। यहाँ पे पहले स्टेज था, मैंने उसे हटाया है। ये एरो में टच लगाया है। हमें घूमना है तो मेरा इंडिकेटर, भाई इंडिकेटर दे दे। ये दवा अब लगाना था, जब लगाना होता है जब लगाना है। हमारा राइट वाला ये वाला नीचे लगा मैं आपको ट्रक देखो कितना डैमेज हो रहा है। बड़े वाला अच्छा लगता है, छोटे वाले में पेट्रोल मेरे को नहीं पता। वैसे तो डीजल होगा, शायद से पेट्रोल। नेक्स्ट वीडियो गाइस चढ़ाई है हमारा दिखाते हैं ना, इसके लिए पावर
कितने पैसे मिले? टाइम की वजह से एक 800 रुपये कटे एंड डैमेज की वजह से 495 रुपीज। भाई मैं देखता हूँ क्या यहाँ पे वॉश करवाने का है। बस अभी मेरे पास पैसे आ गए हैं। ए जल्दी खोल लो। नहीं ये तो हैव हो गया गाइस। इसे रोको तुम एड और चलता है ट्रक पे तो पैसे हो गए मेरे को कलर स्किप कर देते हैं इसको। बैलेंस भी कीजिए क्यों करता है उनके साथ बताओ उनके खाने चलो तो इस चीज को ही दे देते हैं। कितने पैसे हैं? पैसे तो दिखा दो मेरे को। क्यों करूँगा एकदम चेक चलो भाई मैं इस पे जा रहा हूँ बिकॉज कम टाइम वाला मैं जा रहा हूँ ना। पहली बार बंदों से बात करी भाई। पेट्रोल में जाऊंगा देखो यहाँ पे एक कार वॉश का है बस यहाँ पे मेरे ट्रक लगा पहले पेट्रोल मारो और लो ये इसको पहले रिवर्स लूँ मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या देगा। ना ये नहीं खुल रहा ये से निकाल देता हूँ देखते आज लगा क्या लगा जब मेरे को रिवर्स लेना होता है या फिर मुझे कॉल करता है। चलो हाईवे
क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगता। इंडिकेटर अभी भी चल रहा है। भाई तुमको मेरा नुकसान होगा यार, पैसे कटते हुए 5 के 6 घंटे में बहुत ज़्यादा कट गया ऐसा। अब भगाता हूँ मैं। अब भाई पहाड़ आ रहे हैं, पहाड़ ही जैसे रास्ते से पहाड़ को पहाड़ भाई भाई देखो भाई, जब मैंने ना इंडिकेटर मारना बोलते वक्त और ऐसे आगे मेरे तरफ से ना चढ़ाई चढ़ाई पहाड़ों में पहाड़ों में आपको बिल्कुल बताना है कि कौन से ज़्यादा नॉलेज है, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी या इलेक्ट्रिक। मेरे को तो पेट्रोल लगता है। आप बताना करेक्ट आंसर। अभी हम जाएंगे ट्रेन के ब्रिज के नीचे, ब्रिज के नीचे से पावर हो जाऊंगा। फ्रीज होने के लिए फ्रीज हो गई बारिश जैसे से सब लगता है। तो बीच बीच में तोड़ के रखा सारे, जैसे कोई यहाँ से जा रहा उनका उसे उड़ा दिया। खाने को दिखा नहीं नहीं पैसे कट आवाज तो मौसम अच्छा हो गया। एक और फूड के नीचे से जाएगा 93 इसकी गाइस टॉप स्पीड 125 है, 125 बराबर। नीचे से 102
बस आ गई। रुक रुक, माउस रोक उसे। जल्दी क्या खाओगे? गाइस हेडफोन कम पहना करो भाई, मैंने देखा है केबल्स के ना सरों पे डेंट आ जाते हैं। साफ बनाते हैं ऐसे बीच में तो चलाते हैं। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसकी मैं अपने ट्रक को भिजवाऊंगा पूरा अच्छे से। ड्राइवर को सोना बैकग्राउंड को ₹750 लगा दिए तो 3 महीने लग गया उन्होंने। कहाँ जा रहा था कुछ इतनी स्पीड में गया हूँ ऐसी मेरा तो करते करते कंट्रोल हो गया।
पार्टी बनाऊंगी। तो पैसे मिल रहे हैं खाने का घंटी बजेगी। अभी देखता हूँ मैं कर सकता हूँ अपना काम। है ना? स्किल लगानी चलो आज के लिए यही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।